Hello, I am Dr. Somendra Shukla, professor at Axis Colleges, Kanpur. Today we are going to talk about Mosfets. Mosfets are very important type of field effect transistors. Why they are very important category of field effect transistors? Because Mosfets form the basis of VLSI design. So let us see the working and characteristics of MOSFET today. MOSFETs can be classified in two categories. One is called as depletion type MOSFET and one is called as enhancement type MOSFET. In depletion type MOSFET, there is a channel present between source and drain. In enhancement type MOSFET, there is no channel present and we have to enhance the channel. We have to make the channel by the application of certain voltage at gate terminal. That's why this is called as enhancement type MOSFET. And as we have seen in JFETs, that JFETs are of two types, N channel and P channel. So MOSFETs, whether it is depletion type or it is enhancement type, they are also of N channel and P channel. So आज हम लोग देख रहे हैं MOSFETs. MOSFETs बड़ा इंपॉर्टेंट क्लास है फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर्स का. क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज ये बेसिस फॉर्म करता है, ये प्राइमरी बिल्डिंग ब्लॉक है VLSI डिज़ाइन का. सो MOSFET एक इम्पॉर्टेंट डिवाइस है एज फार एज इलेक्ट्रॉनिक्स इज कंसर्न्ड. सो एंड इफ़ वी टॉक अबाउट द क्लासिफिकेशन, अगर हम लोग क्लासिफिकेशन की बात करें तो MOSFETs दो तरीके से क्लासीफाई किए जाते हैं. एक तो डेप्लीशन टाइप MOSFET और दूसरे एनहांसमेंट टाइप MOSFETs. डेप्लीशन टाइप MOSFET में सोर्स और ड्रेन उसके बीच में चैनल प्रेजेंट रहता है. एनहांसमेंट टाइप MOSFET में चैनल प्रेजेंट नहीं रहता. और जैसा कि JFETs में हमने देखा है N चैनल एंड P चैनल, इसका मतलब जो रास्ता जहाँ से होकर चार्ज कैरियर्स पास होते हैं या जहाँ से होकर करंट पास होती है, अगर वो N टाइप का है तो N चैनल फेट होता है और अगर वो P टाइप का है तो P चैनल फेट होता है. सो वेदर इट इज़ एनहांसमेंट टाइप, वो एनहांसमेंट टाइप का हो या डेप्लीशन टाइप का, N टाइप का अगर चैनल है तो N चैनल, P टाइप का चैनल है तो P चैनल. सो N type MOSFET enhancement, P type MOSFET enhancement, N type MOSFET depletion, P type MOSFET depletion. Now, the construction of depletion type MOSFET, will start with depletion type MOSFET. Depletion type MOSFET means the channel is present. So, as you can see here, that there is a block, basic block, or which forms the basis of this MOSFET. That block is of P type, lightly doped P type block is taken. एक P type का ब्लॉक लिया जाता है lightly doped, उसमें दो रीजन्स डेवलप किए जाते हैं N टाइप के heavily doped. ये जो ब्लॉक है इसको बोलते हैं सबस्ट्रेट और बॉडी. और जो ये N टाइप के दो रीजन्स हैं, इनमें से एक रीजन को बोलते हैं सोर्स और एक रीजन को बोलते हैं ड्रेन. एक रीजन को बोलते हैं सोर्स और एक रीजन को बोलते हैं ड्रेन. जैसा कि JFETs में था सोर्स एंड ड्रेन. वन टर्मिनल इज कॉल्ड एज source and one terminal is called as drain. So this terminal is connected to one island of N type and this terminal is connected with another island. One is called as source and one is called as drain. And as you can see that between these two channels, in दोनों channels के बीच में, between these two regions there is a channel. There is a path between these two regions. That path is called as channel. So here in depletion type MOSFET, the channel is already present. We have applied no voltage here, but the channel is present without application of any voltage on the gate. That is called as depletion type MOSFET. Yes, we can control the width of the channel by the application of gate. That is a separate thing. But right now the channel is available. So ये इसका कंस्ट्रक्शन है जिसमें एक P टाइप का ब्लॉक लिया है, दो आइलैंड्स, दो रीजन्स आप बोल सकते हैं, उसमें N टाइप के डेवलप किए हैं. और अब इसमें ये दोनों रीजन्स सोर्स और ड्रेन कहलाते हैं. इसके ऊपर एक ऑक्साइड की लेयर है. इसके ऊपर एक ऑक्साइड की लेयर है. कौन सा ऑक्साइड? सिलिकॉन डाइऑक्साइड, जो कि एक इंसुलेटर की तरह काम करता है. और उसके ऊपर यहां पर एक मेटेलिक लेयर है. तो मेटल, ऑक्साइड, semiconductor, and the device is field effect transistor. That's why it is called as MOSFET or metal oxide semiconductor field effect transistor. How it works, किस तरीके से ये काम करता है वो देखते हैं. So
as we have seen here, that the construction of MOSFET, and now let us move towards the working. Initially, if we put this gate at zero potential, अगर इस गेट को हम जीरो पोटेंशियल पे रखें और ड्रेन और सोर्स इसके बीच में एक वोल्टेज अप्लाई करें, देन व्हाट विल हैपन? जीरो पोटेंशियल पे रखा, इसका मतलब यहां कोई वोल्टेज नहीं दिया हुआ है, और ड्रेन और सोर्स को कनेक्ट किया है एक बैटरी से, तो क्या होगा कि यहां पर एक इलेक्ट्रिकल करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगी। इस तरीके से एक इलेक्ट्रिकल करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगी। ये इलेक्ट्रिकल करंट जैसे जैसे ड्रेन वोल्टेज बढ़ाते जाएंगे, बढ़ती जाएगी। दिस इलेक्ट्रिकल करंट will keep on increasing VDD, or the voltage between drain and source, and after some specific amount of voltage this current becomes constant. इसके बाद एक certain amount of voltage जब इस पे अप्लाई हो चुका होगा तो ये करंट कांस्टेंट हो जाएगी, and that point of voltage is called as pinch off voltage. So ये करंट कहां से फ्लो हो रही है, क्यों फ्लो हो रही है? चैनल ऑलरेडी अवेलेबल है, इस वजह से फ्लो हो रही है सोर्स और ड्रेन के बीच में। सिंपल एक सेमीकंडक्टर ब्लॉक की तरह काम कर रहा है और वोल्टेज बढ़ाने पर करंट बढ़ रही है। आफ्टर सर्टेन अमाउंट ऑफ वोल्टेज दिस करंट बिकम्स कांस्टेंट, एंड द कांस्टेंट करंट इज नोन एज IDS saturated. That means drain source current saturated. Now if we apply a negative voltage here, then what will happen? As we know that the channel is of N type. हम जानते हैं कि जो हमने चैनल बनाया है वो N टाइप का बनाया है, N टाइप का चैनल है, और यहां पर अगर आप नेगेटिव वोल्टेज लगाएंगे, N टाइप का चैनल है, इसका मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट देयर, फ्री चार्ज कैरियर्स एंड इलेक्ट्रॉन्स, बिकॉज N टाइप चैनल है तो इलेक्ट्रॉन्स यहां पर होंगे। अब अगर आप गेट पर कोई नेगेटिव वोल्टेज लगा दें, यानी गेट पर नेगेटिव वोल्टेज अप्लाई करते ही क्या होने वाला है, जरा वो देखते हैं। गेट पर नेगेटिव वोल्टेज लगाने से सबसे पहले क्या होगा, ये इन इलेक्ट्रॉन्स को चैनल से दूर जाने के लिए फोर्स करेगा, और यहां से जो पी टाइप का सबस्ट्रेट था यहां से होल्स को अट्रैक्ट करेगा। इन दोनों ही केसेस में यहां पर यानी कि चैनल पर जो इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं उनकी नंबर में, उनकी संख्या में कमी आएगी। इसका मतलब चैनल की विड्थ कम हो जाएगी। चैनल की विड्थ अगर कम हो जाएगी, और विड्थ कम होने का रीजन क्या है कि चार्ज कैरियर्स की यहां पर कमी हो जाएगी, और चार्ज कैरियर्स की कमी हो जाने की वजह से अब यहां पर अगर हम VDS लगाएंगे तो जितनी अमाउंट का VDS पर वहां पर जो करंट मिल रही थी, सेम अमाउंट पर का VDS यहां पर लगाने पर अब आपको करंट कम मिलेगी, क्योंकि अब आपने रास्ते को पतला कर दिया है और चार्ज कैरियर्स वहां पर बहुत कम बचे हैं। तो अगर हम इसको प्लॉट करें, इसी को जो अभी मैंने आपके साथ में बात किया है कि इनिशियली हमने यहां पर जीरो वोल्टेज यानी VGS गेट और सोर्स के बीच में कोई वोल्टेज नहीं लगाया है। इसको इस तरह भी देख सकते हैं आप। अगर मैं इसको आपके लिए ऐसे बनाऊं तो शायद आपको समझने में थोड़ी सी आसानी होगी। ये P टाइप का सबस्ट्रेट, दिस इज N प्लस, दिस इज N प्लस, and here the channel is present. This is insulator and this is metallic gate. Initially this is drain, this is source, this is gate. Initially what we do is we connect this G and S and no potential is applied, whether it on G or on S. So we can say that VGS is equal to 0. No voltage is applied between gate and source. When no voltage is applied between gate and source, and then if we apply a voltage here by application of some battery, then what will happen, that a current will start flowing like this in this direction, right? Now in the second case, when we apply
सर्टेन अमाउंट ऑफ नेगेटिव वोल्टेज। जब हमने इसमें थोड़ा सा नेगेटिव वोल्टेज लगा दिया, थोड़ा सा नेगेटिव वोल्टेज पे लगाने पर क्या होगा कि यहां पर अगर आप थोड़ा सा नेगेटिव वोल्टेज लगाएंगे तो ये चैनल की जो विड्थ है, ये विड्थ निश्चित तौर पर पहले के कंपैरिजन में अब कम हो जाएगी। तो जो करंट है वो पहले के कंपैरिजन में आपको जो मैक्सिमम करंट VDS लगाने पर मिल रही है वो कम करंट मिलेगी। होता इसमें क्या है कि जैसे ही हम VDS लगाते हैं वैसे ही करंट बहुत तेजी से बढ़ती है और उसके बाद करंट बिकम्स कांस्टेंट। सो द कांस्टेंट करंट और द सैचुरेटेड करंट at VGS is equal to 0, saturated drain source current at VGS is equal to 0, we used to call it as IDSS, drain source saturated current. And when we apply some negative voltage, so जो रास्ता है वो थोड़ा सा कम हो गया, रास्ता कम हो गया, तो अब ये जो ड्रेन सोर्स करंट है अगर आप देखें तो सेम अमाउंट ऑफ VDS पे कोई एक वोल्टेज V ले लें अगर, तो सेम अमाउंट ऑफ वोल्टेज पर यहां पर जो आपको करंट मिल रही है वो IDSS ज़्यादा है, जबकि यदि आपने VGS एक नेगेटिव वोल्टेज लगाया, इसका मतलब रास्ते को पहले से आपने थोड़ा छोटा कर लिया, तो उसी वोल्टेज पर अब देखिए आपको कम करंट मिल रही है। VGS में अगर और नेगेटिव वोल्टेज लगाया यानी चैनल को आपने और पतला कर लिया तो कम रास्ता, कम चार्ज कैरियर्स मूव होंगे, कम चार्ज कैरियर्स वहां पर बचे होंगे, तो करंट आपको सेम वोल्टेज पर और कम करंट मिलेगी। अब इसी में एक चीज अगर हम और करके देखें कि इन प्लेस ऑफ जीरो वोल्टेज इफ वी अप्लाई सम पॉजिटिव वोल्टेज देन व्हाट विल हैपन। अगर हम इसमें कुछ पॉजिटिव वोल्टेज लगाएं, तो अगर इसमें आप कुछ पॉजिटिव वोल्टेज लगाएंगे तो क्या होगा, पॉजिटिव वोल्टेज लगाने पर जो नेगेटिव वोल्टेज लगाने पर परिणाम आ रहा था उसका उल्टा परिणाम आएगा, यानी कि जो आपका चैनल था ओरिजिनल, पॉजिटिव वोल्टेज अगर आप लगाएंगे तो वो चैनल और बड़ा हो जाएगा, चैनल की विड्थ ज़्यादा हो जाएगी। ये N टाइप का चैनल है, पॉजिटिव वोल्टेज लगाया तो इलेक्ट्रॉन्स जो सबस्ट्रेट या बॉडी में होंगे वो यहां पर जाके इकट्ठे होने लगेंगे और इस चैनल की विड्थ को बढ़ा देंगे। सो पॉजिटिव वोल्टेज लगाने पर ये जो सैचुरेशन करंट है ये करंट और बढ़ जाएगी इन डिप्लीशन टाइप मॉसफेट। नाउ ये तो जो हमने बात की ये था आपका ग्राफ बिटवीन ड्रेन करंट एंड ड्रेन सोर्स वोल्टेज, बिटवीन ड्रेन करंट एंड ड्रेन सोर्स वोल्टेज। इसको हम लोग बोलते हैं, इसके बीच में जो ग्राफ प्लॉट किया है इसको बोलते हैं ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक कर्व, ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक कर्व। नाउ इफ वी सी द effect of VGS on drain current, then what will happen? As I have told you that at 0 VGS, जब VGS की वैल्यू 0 है तो जो मैक्सिमम करंट फ्लो होती है दैट करंट इज कॉल्ड एज IDSS, मैक्सिमम करंट जो कि सैचुरेटेड हो जाती है वो हमने उसको नाम दिया IDSS। अगर हम नेगेटिव वोल्टेज VGS, ये देखिए एक्स एक्सिस पे VGS लिया हुआ है, नेगेटिव वोल्टेज थोड़ा सा अप्लाई कर देते हैं, अब जो करंट की वैल्यू मिलती है वो पहले से थोड़ी सी कम, फिर थोड़ी सी कम, फिर थोड़ी सी कम, और अगर हम एक वो वैल्यू लगा दें VGS की जो कि चैनल को पूरा का पूरा खत्म कर दे, तो जब आप VDS लगाओगे देन यू विल गेट नो करंट बिकॉज चैनल इज ended now because of the application of negative voltage, and this value of voltage is called as VGS off. This is called as VGS off, and it is equal to VP. VP or pinch off voltage. What was pinch off voltage? Pinch off voltage was when we plotted the graph between ID and VDS, then at VGS is equal to 0, initially current increases abruptly, and then at a certain value of voltage current becomes constant. So that value of voltage is called as pinch off voltage or VP. So this VP is equal to VGS off. So this curve between ID and VGS is called as
transfer characteristic curve of depletion type MOSFET. The IDSS drain current, saturated drain current at VGS is equal to 0. The relationship between these, that means VGS, VP, IDSS and ID, is given by this equation as it was there in JFETs. So depletion type MOSFETs are almost behave in same manner as JFETs were behaving. Now if we talk about symbols, so these symbols are once again more or less like the symbols of JFET. The only difference is that in JFETs the source and drain terminals, and this channel, it is connected with gate. Here as you can see that there is a gap between the gate and the channel. The gap is there. Why the gap is there? Because the answer is from the construction of the MOSFET, that there is an insulator between gate and channel. That's why a gap is there, right? And the arrow, I think from the same philosophy, that arrow shows P to N. That means when you move from P to N, or in any PN junction, current can move only from P to N, not from N to P. That's why the current is shown here going inside, because the substrate is of P type, and these regions, they were of N type. That's why this current is going from substrate to the channel. That's why this arrow is from substrate to the channel. In actual case, there is no current there, but the arrow shows this P to N. The same is the case here in P type. In P type, the channel is of P type and the body is of N type, so current is going outside. Now, if we talk about enhancement type MOSFET, the only difference is that here everything is same. That means there is a P-type substrate, there is a source, there is a drain, N-type source and drain, and these are heavily doped regions. So, and there is no channel present in between these two regions. Channel is not present. So, except the channel, rest everything is same. But because the channel is not there, that's why it is a different device, and we used to call it enhancement type MOSFET. So the basic construction of an N-channel enhancement type MOSFET is as shown in the figure. A slab of P-type semiconductor is used as substrate, and we used to call it as body also, substrate or body. The drain and source terminals are connected to the N-type doped regions through the metallic contacts. Drain and source, these are connected to these N-type regions. But most important point to be noted is that the channel is absent. So in an enhancement type MOSFET, channel उपस्थित नहीं होता, channel present नहीं होता. The insulating SiO2 layer is still present. बाकी सारी चीजें सेम है. तो अगर अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग प्लॉट करें तो आपको एक चीज सबसे पहले समझ में आ जाएगी कि इफ द चैनल इज नॉट प्रेजेंट, देन इफ वी डू नॉट अप्लाई एनी वोल्टेज टू द गेट, अगर हम कोई वोल्टेज गेट पे ना लगाएं और सीधे सीधे ड्रेन सोर्स के बीच में एक बैटरी लगा दें, नो करंट विल फ्लो बिकॉज देयर इज नो चैनल प्रेजेंट. So the operation can be explained in two different operating conditions. One is when VGS is equal to 0 volt, and second one is when VGS is equal to positive. So when VGS is equal to 0, no current will flow. When VGS is equal to 0 and a positive voltage is applied between its drain and source, then due to the absence of N-type channel, a zero drain current will flow. This is totally different from what happens in the depletion type MOSFET,
where ID is equal to IDSS at VGS is equal to 0. ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि in that case the channel was there. Here the channel or the path is not available. That's why no current will flow when there is no voltage present at the gate terminal. And what kind of voltage? The voltage which makes the channel present, or which makes the channel available, or which will attract the electrons to form the channel. Now, if we apply some positive voltage to the gate, this positive voltage will do what? This positive voltage will move the holes present, as this is a p-type substrate, holes away from this region. This positive voltage, positive will repel holes away. Positive will repel holes away from the channel, and this will attract electrons towards the channel. इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्ट करेगा, होल्स को रिपेल कर देगा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स आके इकट्ठे होने लगेंगे, ये वोल्टेज बढ़ाते जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जाएंगे, और उस गेट वोल्टेज पर जिस पर की कंप्लीट चैनल बन जाता है, दैट वोल्टेज इज कॉल्ड एज थ्रेशोल्ड वोल्टेज और VTH. So that minimum voltage is required for drain current. Which minimum voltage? Which will make the channel present, or which will enhance the channel. Here channel was not present, we are making it by the application of gate source voltage. So once the channel is made, then all the characteristics are once again same, that if you apply VDS, you will get a current, and after a certain value of VDS, current becomes saturated. So this results in creation of a depletion region near the SiO2 insulating layer, because the minority carriers in the p-type substrate will be attracted towards the gate terminal and gather at the surface of the SiO2. What it is saying? It is saying that when you apply a positive voltage here, this positive voltage will repel the holes, and this positive voltage will attract the electrons, and these electrons will start accumulating here, and they will form the channel. So once the channel is formed, the electron concentration near the SiO2 layer increases to such an extent that it creates an induced N channel which connects these two N-type regions. So once these two N-type regions are connected, that means there is a path or the channel is available. Now the drain current starts flowing through this induced channel if we apply VDS, and the value of VGS at which this conduction begins is called as threshold voltage. And once again, if we see the characteristics are same. That means on the application of VDS, current start increasing, and at a certain value of voltage, current becomes constant. That is called as VP, or pinch off voltage. And this pinch off voltage, after this, the region where current is constant, this region is called as saturation region, and the region before occurring the pinch off, where the graph between VDS and ID is a linear graph, that region is called as ohmic region. That region is called as ohmic region because it follows the Ohm's law. So as you can see or verify that the characteristic curve is almost same as it was there in depletion type MOSFET. But before this value VTH, no current will flow. Before this value VTH, that means a minimum VGS which is required to enhance the channel, which is required to form the channel, that is VTH. And if we keep on increasing this value VGS, the minimum value is VTH, and if we keep on increasing this value, then the width of the channel increases, and you will get more and more amount of current here.
So the current through the channel depends on how many number of charge carriers available in the channel, or you can say on the width of the channel. So the drain current is 0 for VGS is less than VT or VTH. थैंक यू वेरी मच. नेक्स्ट टाइम एक नए टॉपिक के साथ फिर से हम लोग डिस्कस करेंगे. थैंक यू वेरी मच.